Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Hello and welcome to this Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर A.K. भट्टाचार्य जी। भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। और पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Ambrish. Growth momentum of the country to be sustained in 2023-24 in an atmosphere of easing inflationary pressures, says RBI. Window of applications under Production-Linked Incentive Scheme 2.0 for IT hardware to open from the 1st of next month. And domestic stocks witness modest gains amid mixed global cues. Sensex closes near the 60,000 mark, Nifty above the 18,600 level. रिजर्व बैंक ने कहा है कि मुद्रास्फीति के घटते दबाव के माहौल में 2023-24 के दौरान देश में विकास की गति बनी रहेगी। आईटी हार्डवेयर क्षेत्र में उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के दूसरे संस्करण के लिए आवेदकों को अगले महीने की 1 तारीख से आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा और विश्व के बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 63,000 और निफ्टी 18,600 अंकों के ऊपर बंद हुआ। Let's begin with our top story of the day. The Reserve Bank of India, RBI, has said that India's growth momentum is likely to be sustained in 2023-24 in an atmosphere of easing inflationary pressures. According to the RBI's annual report released today, the country's sustained growth momentum is going to be on the back of sound macroeconomic policies, softer commodity prices, a robust financial sector, a healthy corporate sector, and a continued fiscal policy thrust on the quality of government expenditure. The RBI report, however, added that there could be downside risks to the growth due to the slowing global growth, protracted geopolitical tensions, and new stress events in the global financial system. The RBI's annual report for 2022-23 said its monetary policy is pointed towards withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target and supports growth at the same time. Mr. Bhattacharya, the report that has come out from the RBI today, quite a welcoming report that it is, and it's good news for the economy also. Well, it does highlight the positives and also points to what could be the worry points or the areas of concern. So it's a balanced assessment of the state of the Indian economy. It's very clear that the Indian economy is at that point of its challenges where the global challenges and the domestic opportunities are very much there for the managers of the economy to handle. On the one hand, you have the global economic challenges of demand slowing down in the world markets, so therefore India's exports might be hurt. The geostrategic concerns, if the Russia-Ukraine war continues, if there is some sort of black swan event, like if the Taiwan war breaks out. So these are the global situations which are cause for concern, which the RBI notes. But at the same time, the domestic sector, the domestic economy, all the high-frequency indicators are showing signs of growth. If you look at whether it is the GST collection or whether it is the commodity prices, yes. And as the RBI report itself says that the inflationary pressures are easing. And if the crude oil prices remain subdued or muted at this level, it might trigger those positive impulses in the economy. So the RBI annual report obviously is banking more on the domestic side of the economy
managing to face up to the global challenges and come up with a kind of a growth rate which everybody is talking about, 6.5% or so. That is in the current year. Last year's growth rate, you will know by tomorrow. You will know what is the revised estimate for last year's growth rate. You mentioned, of course, the facts that the RBI report is also, flagging some red flags, so to speak, what could be the things that could have a little negative impact. And, especially because you mentioned the fact that the slowing global growth. And just recently we had this news that Germany is officially now in the second year of recession. Now, Germany is in recession. We are seeing record inflationary, inflation in a lot of Western countries. How is that going to impact India's, economic growth overall? Because it's obviously directly impacting India as well. Sure. Which is why the need to revive the domestic economy is even more pronounced. Because, as you rightly pointed out, Germany has entered a recessionary phase, and this can well be the beginning of a trend where other major economies in Europe may also fall a prey to recession. Now, if that happens, then certainly the global economic outlook will turn for the worse. Demand will be affected. And so, therefore, India's exports will also be more challenging. So, therefore, it is the domestic economy, and to what extent the domestic economy can be kept in good shape is going to be the focus. Because in India's policymakers, their ability to control the global developments is very limited. It is hardly anything. So the policy focus must be on the domestic economy side. Macroeconomic balances must be ensured. Inflation control should be the top priority. Making sure that the interest rates and demand within the economy is ensured. Today, the unemployment rates from the PLFS latest report shows that it has declined. These are all signs that can be exploited for the positive gains for the economy. But important thing is policy cannot be sort of be taken lightly, and policy response has to be very, very strong. भट्टाचार्य जी, इंटरेस्ट रेट के बारे में आपको क्या लगता है कि अब समय आ गया है कि कुछ उसमें कटौती की संभावना है रिजर्व बैंक की? बहुत लोगों का मानना ये है कि इस बार भी शायद पॉज किया जाए. इंटरेस्ट रेट को घटाना इस वक्त शायद थोड़ा बहुत जो जून की पॉलिसी जो होगी थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो इन्फ्लेशन जो है वो हालांकि 6% 5% के नीचे आया है, पर टारगेट है 4%. तो मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बैठक में ये चीज में तय करेंगे. जरूर इंटरेस्ट रेट को घटाना एक ऑप्शन जरूर होगा इस कमेटी का, क्योंकि बहुत लोगों का मानना लास्ट टाइम जो पॉलिसी में बैठक में जब अप्रैल की बैठक हुई थी तब उनका मानना था कि जो इंक्रीज जो 2.5% की 2.5 परसेंटेज पॉइंट की जो इंक्रीज पिछले एक साल में की गई थी उसकी इम्पैक्ट ऑलरेडी नजर आ रही है. तो बात तो सही है कि इन्फ्लेशन रेट थोड़ी बहुत कम हुई है, पर शायद इस बार भी उसको वॉच करे आरबीआई पॉलिसी, और मे बी उसके बाद कट करने की उम्मीद कर सकते हैं. Well, the RBI governor did say last when you were mentioning the last MPC meeting that it was the time to pivot, and pause. And the finance minister has also said, that inflation, they're going to keep a very strong, strict eye on the inflation. So he said it is a pause, not a pivot. Not a pivot, yes, please. Yes. So obviously, like we are saying that it may not be. We may not see the beginning of reduction in the rate hikes, but maybe a pause will continue. Most likely the pause will continue. What we can probably rule out is a further increase at this stage. Given all the parameters of how the capacity utilization levels are going up, they have gone up to 74% in the manufacturing sector. So I think a pause is a very likely outcome.
But I don't think the Reserve Bank of India Monetary Policy Committee is in a mood to push the interest rates northwards at this stage. We'll get to know by next week June, when it happens. और चलते हैं अगली खबर की ओर। आईटी हार्डवेयर क्षेत्र में उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के दूसरे संस्करण के लिए आवेदकों को अगले महीने की 1 तारीख से आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। हाल ही में सरकार ने उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के दूसरे संस्करण के लिए 17,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी, ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत देश की विनिर्माण क्षमताओं को विकसित किया जा सके और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना की अवधि 6 वर्ष है और इसमें 2,400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश संभावित है। उम्मीद है कि इस योजना से 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, जिसमें 75,000 प्रत्यक्ष रोजगार शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में पिछले 8 वर्षों के दौरान 17% की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर लगातार बनी हुई है और इस वर्ष इसने 105 अरब अमेरिकी डॉलर के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर लिया है। आईटी हार्डवेयर क्षेत्र में उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना से लैपटॉप, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर और छोटे उपकरणों के विनिर्माण को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिलेगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का टर्नओवर 2025-26 तक लगभग 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस योजना में सेमीकंडक्टर डिजाइन, आईसी विनिर्माण और पैकेजिंग को प्रोत्साहन उपकरणों के रूप में शामिल किया गया है। भट्टाचार्य जी का बड़ी अच्छी खबर है, सरकार जिस तरह के ये दूसरी संस्करण ला रही है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम है, और इससे उम्मीद है कि काफी फायदा होगा। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो जैसे आपने कहा कि ये दूसरा संस्करण है। ये पहले संस्करण में मोबाइल फोन के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था और मोबाइल फोन की जो पीएलआई जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो था, उसका जो हमने देखा है कि काफी कंपनियां आकर वो मोबाइल फोन की जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स काफी वृद्धि हुई है। हालांकि सरकार के खजाने से वो सब्सिडीज ज्यादा है, पर अगर आप नौकरी की बात करते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, और ये मोबाइल फोन का जो विनिर्माण जो है वो ऐसी सेक्टर में है जो जिसमें जो नौकरी होती है वो एलीट जॉब्स नहीं है, वो मिडिल इनकम लेवल, लो इनकम लेवल के लोग को नौकरी ज्यादा मिलती है, क्योंकि असेंबली जॉब है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर का है। तो मैं समझता हूं कि ये जो जॉब की जो ग्रोथ होती है इससे तो वो इंक्लूसिव होती है। पर ये दूसरे संस्करण में हम जो फोकस देख रहे हैं वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर ज्यादा है, आईटी टैबलेट लैपटॉप्स के ऊपर है। तो ये टेक्नोलॉजी की से ये थोड़ा हाई लेवल का है, तो इसमें क्वालिफाइड मैकेनिक्स की जरूरत होगी। तो मैं इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि ये पीएलआई तो अच्छी पॉलिसी है, पर उसके साथ साथ अगर हम स्किलिंग और रीस्किलिंग का भी फोकस करें, क्योंकि हमारे देश में स्किलिंग और रीस्किलिंग की बहुत सख्त जरूरत है, और ये सारे प्रोजेक्ट्स हम आत्मनिर्भरता की तरफ तभी पहुंचेंगे अगर हम अपने देश में ही अपने लोगों को स्किलिंग और रीस्किलिंग के जरिए उनको नौकरी पाने में उनको सुविधा हो। ऐसा न हो कि प्रोजेक्ट्स है पर लोग इसमें जो बनाने वाले हैं, काम करने वाले नहीं हो। तो ये दोनों चीज एक साथ ही होगी, हम आशा कर सकते हैं। लेकिन जैसे फिगर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ग्रोथ रेट हमारी बहुत अच्छी बनी हुई है पिछले समय से, तो निश्चित रूप से इस योजना से वो उसको आगे बूस्ट मिलेगा। इसीलिए मेरा बोलने का मकसद ये था कि अभी तक हुआ है, पर ये जो दूसरा संस्करण में ये टेक्नोलॉजिकली और भी उन्नत चीज है, ये और भी डेवलप्ड सेक्टर में काम होगा, तो हमें उसकी और टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड मैन पावर की भी प्रावधान के बारे में सोचना है। Mr. Bhattacharya, of course, like
the PLI scheme, in whichever field it is, the motive has been to boost the country's manufacturing capabilities and, to increase exports. But if we take especially, we're talking about this PLI 2.0 for IT hardware, a lot of it is also, it's also because given the size of our domestic economy, and we were talking just now about the policymakers should be focusing because given the geopolitical, scenario right now. So I think this would also be, this is also our domestic market is so vast and so big that these schemes would be helpful here as well. Yeah, absolutely. There is no doubt that our domestic market is large, but if you look at the focus of the second edition of the PLI for the IT hardware, as I was saying, the focus is on semiconductor design chips. Now, the manner in which the use and utility and application of chips is increased manifold, that earlier chip usage was restricted to computers, but now if you talk about even in this room, the audio equipment will all have chips. Yeah. Now the use of chips has become far more extensive and intensive. So the demand for chips is growing so rapidly that we need a reliable domestic source of these chip and properly designed chips. Now India is so far not known as a chip maker, but India is globally known as a chip designer. Now we had the design capabilities, and now probably it is need to supplement that design capabilities with the manufacturing capabilities within the country in view of the large the demand that is going to come up for this sector. जी, और चलते हैं अगली खबर की ओर। शेयर बाजारों का हाल जान लेते हैं। प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज 0.2% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स लगभग 63,000 के स्तर को पार कर गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18,600 अंकों के पार चला गया। दोनों ही सूचकांकों में दुनिया के बाजारों से आ रहे मिले जुले संकेतों के बीच तेजी का रुख दिखाई दिया। सेंसेक्स 123 अंक की बढ़त के साथ 62,969 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी 35 अंक बढ़कर 18,634 अंकों पर आ गया। व्यापक बाजार में बंबई शेयर बाजार का मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक प्रत्येक में लगभग 0.2% का इजाफा हुआ। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 18 के शेयरों में बढ़ा, जबकि 12 में गिरावट दर्ज की गई। Key domestic indices today closed with marginal gains of 0.2%. The Sensex at the Bombay Stock Exchange finished near the 63,000 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange settled above the 18,600 level. Both indices rose amid mixed cues from global share markets. The Sensex climbed 123 points to finish at 62,969. The Nifty appreciated 35 points to end at 18,634. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small-cap indices added around 0.2% each. In the Sensex Index, which is a pack of 30 companies, shares of 18 firms appreciated while 12 declined. ITC climbed 2.3%, while Bajaj, Finserv and Kotak Bank both rose 1.1% each. On the other hand, Tech Mahindra declined 1.3%, Tata Steel fell 1.2% and Sun Pharma slipped 0.9%. In sectoral indices at the BSE, 9 sectors logged gains, while 11 witnessed losses. Financial services and BankX indices both rose 0.4%, while metal declined 1.3% and telecom and oil and gas slipped 0.3% each. The overall market breadth was negative as shares of 1,631 companies rose, while 1,874 companies declined. A total of 109 shares remained unchanged. Mr. Bhattacharya, Sensex yesterday climbed the 63K mark, and today it was, it just was there briefly for a few seconds just before closing today. So, given the fact that we were earlier discussing the geopolitical scenario and the economic conditions, all over the world, what is it that, at present time, how do you see the Indian market's performance? How would you assess that? Well, right now the Indian markets are guided largely by two factors. One is the unusually buoyant performance of the banking and the financial sector. Yes. The banks and the financial sectors have done exceedingly well. Actually, they haven't done as well in the last 10 years.
So if you look at any parameter, the banking and the financial services sector have done very well, and they have a strong weight in the market indices. So the stock markets are reflecting that buoyancy in the financial and the banking sector. The second factor is the positive news that is coming from the overall high frequency indicators, that whether it is demand in the economy reflected in the sales of the automotive cars and vehicles, whether it is the GST or whether it is the passenger traveling by airlines or even the railway freight. Yes. Everywhere you see the high frequency indicators are showing that the economy is doing better, and probably demand recession is not yet there, nowhere near to be seen. So the stock market is capturing that, and buoying that sentiment is the global development of a likely resolution of the US debt ceiling problem. Now, if that ceiling problem were not to be solved, then I would imagine you wouldn't have seen the kind of rally that you have seen in the market from the last few days. And if tomorrow the US Congress meets, and that is the date when they are supposed to meet on Wednesday, if they meet and approve this deal that has been struck, at least for the next 2 years, you can see that this world's largest economy and the world's the Fed that produces those paper which every government actually buys and keeps as a safest instrument ever. Now that uncertainty will go away. So I think the stock market is reflecting the mood at all these levels. So, both the indices actually are right now, nearing their lifetime high levels, and experts believe that they may cross it during this week. Again, I would say crystal gazing, but what is your opinion on that? Well, my sense is that the consolidation of the market is going to happen. Now, whether they cross the record high level of 63,500 or so, that was the figure, is something that will be achieved in one go. I think only time will tell. But what will happen certainly is that as long as the domestic high frequency indicators keep giving positive signals, my sense is that the stock markets will keep reflecting that positive sentiment. जी, तो आपको लगता है इसका मतलब कि अभी आने वाले समय में जो उथल पुथल मार्केट में हमें दिखाई देती थी वो थोड़ी रुकेगी और रेंज बाउंड ज्यादातर रहेगा? रेंज बाउंड और वॉलेटिलिटी कहीं नहीं जा रही, वॉलेटिलिटी रहेगी जी। सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स प्ले चलेगा। जैसे अगर हम देखते हैं मेटल्स, टेलीकॉम्स, ये सेक्टर्स जो हैं अभी भी अच्छा नहीं कर रही हैं। अगर सेक्टर को सेक्टर वाइज देखेंगे तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और जो सर्विसेज सेक्टर जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि जो मार्केट जो है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर उस सेक्टर के बारे में अच्छा बता रहे हैं। पर अगर आप टेलीकॉम देखें या मेटल सेक्टर में देखें वो काम अच्छा नहीं हो रहा वहाँ पे। Moving on to the Asian European markets, Asian stocks today gained except Singapore's Straits Times Index, which fell 0.2%. South Korea's Kospi rose 1%, while Japan's Nikkei 225, China's Shanghai Composite Index, and Hong Kong's Hang Seng Index slipped marginally up to 0.2%. European markets were mixed in intraday trade. Germany's DAX gained 0.5%, while London's FTSE 100 declined 0.6%, and France's CAC 40 slipped 0.5%. On the other hand, the U.S. stock market remained closed for trading yesterday on account of Memorial Day. The U.S. bond market also remained closed due to holiday on the 29th of May. We were just discussing the debt ceiling issue that has been plaguing the U.S., and apparently a deal has been struck between President Biden and the Republicans. If and as is this expected, if this deal goes through and the debt ceiling issue is resolved, what do you think its impact is going to be on the U.S. Fed meeting, which is also going to happen this weekend? Well, I think this will cool down the temperature at the U.S. Fed meeting because this crisis had not been resolved. Then I would imagine that the Fed committee members would have been a little more worried. I still don't think that the Fed Reserve will go in for any pause or anything like that, unlike in India. The job has still not been fully done.
But I have a feeling that this breather of sorts, relief on the debt ceiling agreement, is good news, relief, but not as good as it was hoped to be. Remember, in the past, whenever the debt ceiling settlements have happened, they have taken for 10 years. Now, this is only for 2 years. And 2025 will be another new government will come in. So, it's the Fed will also keep that in mind before it takes a position on this issue. और रुपए का हाल भी जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य आज 82 रुपए 72 पैसे रहा। विश्व की 6 बड़ी मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी मुद्रा की शक्ति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 103.93 पर दर्ज किया गया। भट्टाचार्य जी, रुपए की जो इस समय स्थिति है, तो आपको क्या लगता है अभी ऑलमोस्ट जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी? कुछ आपको फ्लक्चुएशंस दिखाई देते हैं? मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी में उतना अंतर नहीं होगा, स्टेबिलिटी रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है कि हालांकि हमारा एक्सपोर्ट्स अप्रैल की जो फिगर जो आई है उसमें 12% की गिरावट हुई है, पर इंपोर्ट्स भी काफी गिरी है। तो उससे गिरने से जो ट्रेड डेफिसिट जो है वो नीचे आ गई है, तो और वो इम्पैक्ट कर रहा है आपका जो रुपए की जो डॉलर की जो डिमांड है उसमें डिमांड करती है। और दूसरी बात अगर देखें आप, जो तेल के दाम जो हैं आपके, दो तरह से इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रुपए में हुआ है। एक तरफ तो हुआ है कि जो रशियन यूराल्स जिनके दाम अभी काफी कम है, वो हम करीबन 44% हमारा सप्लाई रशियन यूराल से आ रहा है और उसका दाम काफी कम है। और जो ब्रेंट क्रूड जो है, जो इंडियन बास्केट क्रूड ऑयल में जो रिफ्लेक्ट करता है, उसमें भी दाम काफी कम हो गए हैं। तो ये सारे दाम कम होने से क्या हो रहा है कि जो डिमांड फॉर डॉलर कम हो रहे हैं। हालांकि जो डोमेस्टिक जो पेट्रोल डीजल प्राइसेस में उतनी कमी नहीं आई है, पर जो मैक्रो इकोनॉमी की दृष्टिकोण से देखें तो रुपए की जो स्टेबिलिटी जो है इस कारण। लेकिन ये भी है कि रिटेल में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ भी नहीं रहा है, स्टेबल है। ये भी एक स्टेबिलिटी है। जी। और चलते हैं सोने का मूल्य जान लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के अनुबंध वाले सोने में 490 रुपए की तेजी दिखाई दी। 10 ग्राम सोने का मूल्य 59,910 रुपए दर्ज किया गया। चांदी का मूल्य जून के अनुबंध के लिए 150 रुपए बढ़कर 71,275 रुपए प्रति किलो रहा। वैश्विक बाजारों में दिन के कारोबार के दौरान न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,978.90 प्रति औंस पर रहा और चांदी भी बढ़त के साथ $23.40 प्रति औंस पर बनी रही। Moving on to oil prices today fell around 1.5% in intraday trade. Crude prices fell amid concerns about the U.S. debt ceiling pact and mixed messages before OPEC Plus meeting on 4th June. In intraday trade, Brent crude was trading at $75.75 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $71.70 per barrel when reports last came in. Mr. Bhattacharya, of course, we just said that right now, so far as India is concerned, comfortable, the oil prices, international prices are quite comfortable, but we have an OPEC Plus meeting on 4th June, and at the last meeting in April, they had announced a cut in production. And, there are conflicting statements coming out from the members. So what is the expectation this time? My sense is that given what is happening in Europe, and given the Germany recession news is going to impact this meeting, the OPEC Plus meeting means Russia is also going to take part in this. My reading is that the production cut that was earlier feared may not even take place, or even if it takes place, it will be a very small quantum, which is why there are mixed messages coming from the market. So therefore, from India's point of view, is good news, but from the oil market thing, stability continues. जी, भट्टाचार्य जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।
And before we close, a reminder of the headlines. Growth momentum of the country to be sustained in 2023-24 in an atmosphere of easing inflationary pressures, says RBI. Window of applications under Production-Linked Incentive Scheme 2.0 for IT hardware to open from 1st of next month. And domestic stocks witness modest gains amid mixed global cues. Sensex closes near 63,000 mark. Nifty above 18,600 level. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 6:30 p.m. Till then, from the entire team of Market Mantra, Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.